हेलो, नमस्ते। मैं हूँ अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर and welcome back to another tutorial. Since it is the new year, I also want to ask you what have you done about your New Year's resolution of learning at least one new dance style or skill. If you haven't enrolled with us yet, please do get in touch with us with the WhatsApp number given below. We offer online classes for Kathak and Semiclassical, which cater to different learning backgrounds, ages, interests and styles. आज का लेसन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज वी वेंचर इनटू द सेमी क्लासिकल डांस मूवमेंट्स। सेमी क्लासिकल एक ऐसी शैली है जो रफली क्लासिकल डांस स्टाइल्स पे बेस्ड तो होती है, लेकिन उसका जो कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, वो शायद उतना बड़ा नहीं है जितना क्लासिकल डांस स्टाइल्स का है, या फिर जो लिमिटेशंस या बाउंड्रीज एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म की होती है, आप सेमी क्लासिकल करते समय लिबर्टी ले सकते हैं और उन बाउंड्रीज के बाहर जा सकते हैं. Now, because a lot of the content that we see today is actually based on Kathak, इसीलिए ये कुछ कथक की मूवमेंट्स है जो आप सेमी क्लासिकल कोरियोग्राफीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सेमी क्लासिकल ये स्टाइल जनरली जो पॉपुलर जॉनरा ऑफ म्यूजिक है, जैसे कि बॉलीवुड म्यूजिक, उस पर परफॉर्म किया जाता है. और जो सबसे पॉपुलर बीट्स है वो इधर 3 बीट स्ट्रक्चर्स होती है या फिर 4 बीट स्ट्रक्चर्स. जो 3 बीट स्ट्रक्चर्स है उसका ट्यूटोरियल आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं. आज हम देखेंगे कि 4 बीट्स में आप ऐसी कौन सी मूवमेंट्स कर सकते हैं जो इंस्पायर्ड बाय कथक है, लेकिन it also gives you a certain freedom to add your own personality, your own flair to all of those movements. जो हमारी पहली मूवमेंट है वो एक्चुअली काफी ज्यादा सिंपल है. आपकी राइट हाथ की उंगली को आप लेंगे और लेफ्ट हाथ से उसे पकड़ेंगे. दिस इज मोस्टली फॉर अ लिटिल बिट फास्टर सॉन्ग्स जिसका पेस रफली है 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें आप एक वेव बनाएंगे जो दोनों हाथों से आपके लेफ्ट साइड में जाती है. Come back to the center. Actually, when I say the center, it's very slightly inclined towards the right side. Now go towards the right. Come back to the center. Again, very, very, very slightly inclined towards your left side. You will know why we are doing this after we've understood how the footwork is. Okay? आप आपका राइट पैर फ्रॉम योर हिप उठाएंगे ऊपर, इससे एक वेव बनाएंगे. All this while your leg has to be very significantly lifted off the floor. Okay, make a wave, come back and settle. When you settle, the pro tip is not to place your foot as it is. उसको थोड़ा सा एंगल देना बहुत ज्यादा जरूरी है. So twist your ankle a little bit towards the right side so that you get to settle down. This is for you to get the required balance. Okay, you do the same thing with your left. You have to accommodate 4 counts in doing so. Hence 1 2 is in making that wave, 3 4 is for you to settle down. Let's do this together. Now the real catch of this movement is to create a lot of twists and turns with your body. They look very, very beautiful if done correctly. 5 6 7 chalo. 1 2 3 4 5 6 7 8. Make sure whatever you are doing, don't forget to use your torso alongside it. Don't forget to make your entire body a part of this movement. हमारी दूसरी मूवमेंट में काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आवर हैंड्स वर्क, क्योंकि कई सारा फोर्स हम अपने हाथों से कलेक्ट करते हैं टू मेक दैट डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले होम पोजीशन में आ जाइए, विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट. फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू थ्रो आउट योर राइट हैंड, मेकिंग अ सेमी सर्कल इन योर लेफ्ट साइड, गोइंग 1 2. इसके साथ साथ आपका जो लेफ्ट हाथ है वो यहाँ पर नीचे पुश हो जाएगा, राइट बिसाइड्स योर वेस्ट, समथिंग लाइक दिस.
When you are doing this, make sure to look in the opposite side by pointing your nose in the right side as you do 1, 2, 3 and 4 में आपको इसी हाथ से एक सर्कल बनाना है जो सिर्फ नीचे की लेवल कवर करता है, which means do not cross this level and make it a big circle, only a smaller circle here in the bottom level and close it back. One more time. 1, 2, 3, 4. Very good. Now switch it up. Do it with your left. 5, 6, 7, 8. Instructions remain the same for the left side as well, which means आपको आपकी नाक से left में point करना है and slowly bring it back as you close your hands. Now the leg movement here is left. When I say left, it means आपको आपका वजन आपके लेफ्ट पैर पर डालना है. 2 में switch it to the right. धीरे धीरे बैलेंस शिफ्ट करना शुरू करें. 3 मुड़ जाए using your left. 4 come back to the center using your right. Now switch it up. Go to your right, 2 left, 3 right, 4 left. Easy enough? Let's put this together. 5, 6, 7, chalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There you go. When you practice this again, make sure you're using your torso. It is never your hands or your feet alone dancing. Your body has to dance. Make sure you're involving every single joint, organ, part of your body when you're doing any movement whatsoever. Add a little bit of flair. Best if you execute it in a higher speed. Our last movement is something that you have very often, very frequently seen in semi-classical choreographies. Why I'm bringing it back here is because we need to polish it. अगर आप इसे सही टेक्निक से करेंगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी. For which आपको सबसे पहले उत्पत्ति में आना पड़ेगा. It is very easy. You need to point your hands in the 4 corners of an imaginary box. So imagine that there's a square in front of you. Now point in all the 4 corners of that square. Starting with your right, hit, left, right, left. Every time you do this, make sure you follow your hands with your eyes. जब मैं कहती हूँ आंखों से फॉलो कीजिए, it does not mean restrict your eyes on your fingers. You have to look parallel to your hands. Superb. Now what's the catch here? What is different? Here we're going to also use our entire body, especially our chest and torso, to enhance it. जब आप ऊपर जाएंगे तब आपको हल्का सा आपके toes पे जाना पड़ेगा. So you do 1, 2 on your toes and then settle in the 3rd and the 4th count. So this is 1, 2, 3, 4. इसमें कोई भी sound expected नहीं है. Don't try to tap too hard. The intent here is to bob up and down when you're doing this movement. The second thing that you may want to remember is the constant switch of torso, because every time you're stretching your hand, you're going to go towards it by bending your torso to the side. Let me remind you, side means your underarm is the closest to your waist. Do not make the mistake of bending forward like this. Instead, bend sideways. चलो एक साथ करके देखते हैं. 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Looks graceful, doesn't it? If executed with the correct technique, you can do it too. And that was all for today.
आई होप आपको ये सीखने में मज़ा आया हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारी ऑनलाइन कथक और सेमी क्लासिकल की एडमिशंस अभी खुली हुई है। तो अगर आप हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू गेट इन टच विद अस विद द व्हाट्सएप नंबर गिवन बिलो। I am going to see you in the classes now, and until then keep dancing.